ओके, क्वेरीज एक अपना क्वेरी हो गया। दिस इज जस्ट वन टेक्निक ऑफ फाइंडिंग कंपनीज, दिस इज नॉट द ओनली वे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉपी कैट इन्वेस्टिंग। Sir, does it work? It works miraculously. If any one of you follows Monish Paprai, yes, Monish Paprai is a very famous, very celebrated investor, and he has been very vocal कि वो खुद क्या करता है। मोनिश पापराय क्या करता है, जो वॉरेन बुफे चार्ली मंगर खरीदते थे वो खरीदता है। He finds out good fund managers, वो जो खरीदते वो कॉपी कर देता है, and he has made amazing amount of wealth just doing that. And there are many videos of him saying this as well. And he's like, I don't have any shame in being a copycat investor. Like, usme kya, there are so many people doing so much hard work. Let me just earn money on their hard work. Yes. So, sir, does this work? There are examples of many people doing this and earning amazing amount of money. So, if you are not a very fundamental or you are not a very, kya bolte hain, accounting person, you don't like such things, you get intimidated, maybe copycat is something for you. Sir, how can we do this? Can you just tell me a way of doing this? Sure. देखो, Warren Buffett himself has said there's nothing wrong with being a copycat investor as long as you copy the right people. You find the right set of people, you feel कि भाई इसका जो वैल्यू सिस्टम है, the way he finds stocks, उसका जो है टाइम होराइजन वगैरह वो बराबर है, you can copy, there's nothing wrong in doing that. So keep your mind open. ऐसा नहीं मैं ही को ढूंढूं, मैंने जो स्टॉक ढूंढा, ऐसा नहीं। There are people out in the market way smarter than us as well. Yours in investing, your network is your net worth. Yes, the more you connect with more people, you get to know more people, you will be able to do very well in investing. Correct? But if you want to reach out, you are at your home, okay, and you want to reach out people who are the best fund managers in India now, how can you do that? You can again use screener kind way to do that. Okay. So let me just go back to screener. Yes, I'm going to screens और लेट्स से फीड। अभी देखो आपको करना क्या है, कॉपी कैट इन्वेस्टिंग करना। यू फाइंड आउट गुड पीपल, यूट्यूब पे जाओ, गो ऑन, यूट्यूब पे इंटरव्यूज आते हैं बहुत लोगों के, एंड लिसन टू अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड थिंक के आपका जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है इट मैचेस विथ whom। जैसे कॉन्ट गाइज है, कॉन्ट म्यूचुअल फंड, दोज गाइज आर वेरी एल्गो बेस्ड। ओके, दे हैव क्वांटिटेटिव मॉडल्स फॉर एवरीथिंग। मॉडल जो बोलेगा ये खरीद तो खरीद, मॉडल बोलेगा बेच तो बेच। ओके, एंड दे कीप चर्निंग अ लॉट, दे डोंट होल्ड, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं हुआ। कॉन्ट इज एन ऑपोजिट ऑफ रादर वैल्यू इन्वेस्टिंग। पराग परिग म्यूचुअल फंड, बोथ आर म्यूचुअल फंड्स। Count Sandeep Tandon, Parag Parikh, Rajiv Thakkar. Rajiv Thakkar and his group has a different mindset altogether. They will hold on to a company for 3, 4, 5, 6 years also. Churn ही नहीं करेंगे, तो churn rate is very less. But they find deeply undervalued stocks and they have patience to hold on to that. समझा? तो अगर मेरा थॉट प्रोसेस पराग परीख जैसा, पराग परीख म्यूचुअल फंड वालों के जैसा, आई विल ट्रैक व्हाट दीज गाइस आर डूइंग। समझा? सो यू फर्स्ट गो थ्रू द होल मार्केट, अंडरस्टैंड कौन कौन स्मार्ट लोग हैं, whom you feel this guy is a smart person, and then you start tracking what these guys are doing and how can you do that. That's something I'll help. This is Sunil Singhania, if you guys have heard about him. Amazing guy. He was the ex Reliance Mutual Fund ka CIO, Chief Investment Officer of Reliance earlier. Okay, now he's heading the Abacus group. तो अगर आप देखोगे, मेरे को चेक करना है सुनील भाई का कंपनी क्या कर रहा है। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट सर्च अबैकस, कंपनी का नाम जहाँ सर्च करना होता है ना, इसके लिए यू कैन जस्ट स्क्रीन बैकस एंड यहाँ पे कॉन कॉल क्लिक कर लो। सो सी टुडे गाइस, these guys have crores and crores of rupees to manage. These guys will never invest on gut feeling because client का पैसा होता है. So they will sit for at least 4, 5, 6 conference calls before they actually invest. बराबर है? तो आपको क्या करना है, यू आर जस्ट ट्रैकिंग के कौन से कॉन्फ्रेंस कॉल में अबैकस का नाम आता है। दे हैव टू ऑब्वियसली से देयर नेम, सो यू अंडरस्टैंड कि अबैकस कौन से कंपनीज को ट्रैक कर रहा है और मे बी दे आर होल्डिंग द स्टॉक्स एंड दे आर जस्ट गेटिंग एन अपडेट। तो आप सिर्फ सर्च करो, वियर्ड वे ऑफ फाइंडिंग बट यस दिस वर्क्स। सो यहाँ पे आप इंटरआर्च बिल्डिंग है, सो आपको पता है अबैकस कौन से कंपनीज ट्रैक कर रहे हैं, इंटरआर्च ट्रैक कर रहा है। बायोकॉन के कौन कॉल में बैठे थे वो लोग, करेक्ट। गरवारे हाइट है, फिल्म्स, आयोन एक्सचेंज, वंडरला हॉलीडेज, डायनेमिक टेक्नोलॉजीज, ग्रीनफ्लाई इंडस्ट्रीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटी फूड्स, ये सारे कंपनीज में बैठ रहा है सीएमएस इन्फोसिस्टम। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्रो व्हाट आर दीस गाइस डूइंग, उनका लिस्ट क्या है। यस, लेट्स से यू डोंट लाइक दीस गाइस, यू आर लाइक समित वर्तक, समित अनदर वेरी सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर। उनका कंपनी का नाम क्या है, सेज वन, सेज वन, आई गेस, आई डोंट नो, मे बी दिस इज हाउ दे राइट इट, सेज वन, यस।
If you now see, आपको मिलेगा समीत वर्धक and his guys are tracking which companies? KPI, Green, Indegene, Gold, Good Luck, REC, सारेगामा, CSSC, Acuitas Chemicals. Acuitas is Ami Organics. उनका नाम चेंज कर दिया, अभी Acuitas Chemicals कर दिया. Quarterly results. क्वार्टरली रिजल्ट्स तो पूरा हमने एक सेशन ही ले लिया इस पर. सो यू नो हाउ इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स है. क्वार्टरली रिजल्ट से आपको पता चल जाता है कि कंपनी में कुछ बड़ा हो रहा है कि नहीं. करेक्ट. तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू, क्वार्टरली रिजल्ट्स से ना मेरे को एक कंपनी मिला था, ब्लूजेट हेल्थ केयर. आई स्टिल रिग्रेट व्हाई डिड आई नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज स्टिल इन डबल थॉट्स, क्या करूं करूं, इन्वेस्ट करूं कि नहीं. उतने में तो द प्राइस वेंट अप अ लॉट. राइट नाउ इफ द प्राइस फॉल्स एंड आई बॉट सम ट्रैकिंग पोजीशन एज वेल. लेट्स सी. सी क्वार्टर रिजल्ट्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो. अभी जब रिजल्ट का सीजन होता है ना, जो जो कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, रिसेंटली स्क्रीनर ना, एंड दिस ऑल प्री वर्जन ऑफ स्क्रीनर. ओके, यहाँ पे यू गेट क्वार्टरली रिजल्ट्स. इफ यू क्लिक ऑन दिस टैब, यू गेट क्वार्टरली रिजल्ट्स. तो यहाँ पे यू कैन जस्ट कीप स्क्रोलिंग. जो भी कंपनी में आपको बहुत ग्रीन दिख रहा है, ओके, सेल्स इज इंक्रीजिंग, एबिट, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग अ लॉट. कुछ फटा है ना, बहुत अचानक प्रॉफिट आया, मतलब यू शुड बी क्यूरियस क्या हुआ. समझा. सो उल्टा करो. आप पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स में यू स्क्रॉल, एंड इफ यू फाइंड कंपनी, देखो ये कंपनी है एचओवी सर्विसेज. एचओवी सर्विस देखो, सेल्स, एबिट, एवरीथिंग ट्रिपल डिजिट इंक्रीज. बट प्रॉब्लम क्या है, मार्केट कैप 69 करोड़. इग्नोर सच अ कंपनी. बहुत रिस्की हो जाता है ना, 69 करोड़ में तो बहुत ही रिस्की है. अगर आपको थोड़ा रिस्क भी लेना है, 300 करोड़ के नीचे देखना है. रूल ऑफ थंब, 1000 के नीचे भी देख रहे हो रिस्की है. एक्सट्रीमली रिस्की 300 करोड़. इज दिस समथिंग दैट आई कीप इन माइंड. 300 करोड़ के नीचे मैं देखता ही नहीं, कुछ भी हो. वो 1000 टका से बढ़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ता. बिकॉज इफ यू पुट योर मनी, ओके, ऑपरेटर ने लेके गया, अब पैसा अटक ही जाएगा, मिलेगा ही नहीं. प्रॉफिट छोड़ो, आपका कैपिटल भी जाएगा. यस, तो डोंट लुक एट कंपनीज बिलो 300 करोड़ मार्केट कैप. यस, सो ऐसे कंपनीज अगर आपको मिल रहा है, और जहाँ थिंग्स आर वेरी मच इंक्रीजिंग, यू शुड बी क्यूरियस इनफ के लेट मी रीड अबाउट द कंपनी. यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, कंपनी में जाओ और फिर कंपनी स्टडी करो. कैसे करना है, वील डिस्कस दैट इन द सेकंड सेशन. How do you filter or shortlist stocks? The last one that I generally use is the industry or sector study. Industry or sector study क्या होता है अभी. आपने ये क्वेरीज यूज किया, कॉपी कैट क्वार्टर रिजल्ट्स. काफी टाइम में क्या होता है कि गाइस, इफ द सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, कोई भी कंपनी अच्छा करेगा उसमें. ठीक है. यस सर. Let us discuss something. Okay. I want you guys to tell me what's common between these companies. केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर, एज मैं लिखते रहेगा, मेरे को स्टॉप बोल दूंगी. ओके. इनफ 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 कंपनीज. क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज कंपनीज, एनीवन? केमिकल सेक्टर, Specialty chemicals. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. केमिकल सेक्टर, बट देयर समथिंग एल्स. समथिंग एल्स दैट आई एम लुकिंग फॉर. Raju is saying specialty chemical. Okay. What is common? What is common between these things? CDMO business. Okay. What you said is correct. Chemical companies. But do you know all these companies? Okay. All these, almost all these companies are 100 baggers. There's a common thread. Almost all. I guess I'm not sure about Vinati Organics, but Vinati Organics ने 80 times दिया होगा. Very similar. But almost all these companies have been 100 baggers in the past. 100 baggers समझना है आपको. आपने 1 लाख रुपए डाला हो तो 1 करोड़ हो गया. 100 bagger. If your share price, if let's say you have invested in a company, तो प्राइस 10 टका 20 टका बढ़ता है, 100 टका बढ़ता है, तब जाकर 2x होता है. If your share price increase by 100%, it becomes 2x, double, फिर triple, फिर 4 times. I'm talking about 100 times, which is somewhat equal to 10,000% increase, मतलब 10,000% profit. 100x, let it sink in. All these companies have done almost 100x. मतलब किसी ने इसमें 1 लाख डाला हो तो 1 करोड़ बन गया होता. Sir, what are you trying to say? All these are chemical companies. माई पॉइंट इज गाइस, ये जो हम फोर्थ एंड लास्ट फिल्टर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, हाउ मेनी इयर्स एवरेज, समवेयर 8 इयर्स, 6-7 साल में ही हो गया, 8 साल. सो आई टेल यू द होल स्टोरी ऑफ व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट इज दिस होल थिंग.
सी गाइस, इन द ईयर 2012 टू 2021, ये पीरियड देखो है ना, 2012 से 2021 हुआ क्या था ना, केमिकल का अनबीटन बादशाह कौन है? विच कंट्री मेक्स द मोस्ट केमिकल्स? चाइना. चाइना चाइना। इज द अनडिफिटेड किंग इन द केमिकल सेक्टर. ओके. बट बिकॉज वहां पे बहुत पोल्यूशन हो गया था एंड गवर्नमेंट हैड टू टेक अ लॉट ऑफ एक्शन. एंड वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं. करेक्ट. सो जो भी डिसीजन लेते हैं इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, अनलाइक इंडिया. ओके, जहाँ डेमोक्रेसी. सो वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन चाइना. चाइनीज गवर्नमेंट सेड शट द फैक्ट्रीज. प्रॉफिट कम होगा ना, वैसे भी उनका कैपिटलिज्म तो है नहीं, अगर प्रॉफिट कम होगा चलेगा. Shut the factories which are harming our environment. So a lot of chemicals, to make those chemicals, you have to pollute a lot. अभी इंडिया में कोई पोल्यूशन नॉर्म्स है नहीं, यहाँ पे पोल्यूशन करो जितना कर. यस. तो व्हाट हैपेंड इज कि इंडिया लकड आउट ओवर हियर. चाइना +1 हो गया इंडिया में. चाइना से सारा डिमांड चला गया इंडिया में. चाइना सेड कि वी आर हार्मिंग अवर एनवायरमेंट. चाइनीज गवर्नमेंट सेड एनवायरमेंट इज गेटिंग हार्म, वी विल नॉट मेक. सो लॉट ऑफ फैक्ट्रीज इन चाइना हैड टू शट डाउन और रीलोकेट. शट डाउन या रीलोकेट करना पड़ा. अब स्पेशलिटी केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह. तो ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज हो गई. पूरे वर्ल्ड में सप्लाई, केमिकल सप्लाई का शॉर्टेज हो गया. तो अचानक से जो डिमांड आ गया इंडियन केमिकल कंपनीज कहां से कहां पहुंच गए. ठीक है. तो अभी हुआ क्या, ये सेक्टोरल ट्रेंड है. ये जो चौथा फिल्टर मैंने बोला ना गाइस, इंडस्ट्री और सेक्टर स्टडी, सेक्टोरल ट्रेंड है गाइस. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे अभी बहुत चाइना में चला गया है. सो अगर किसी इंसान ने फिगर आउट किया होता, if the person had some understanding of macro variables, some understanding of what might happen, and it is common sense. China and India were nearby. China में there is production is stopped. Government has said no production to protect the environment. Now that can't be a 2-day holiday or 5-day holiday. They will have to shut down to protect the environment. पूरा डिमांड शिफ्ट हो गया इंडिया में. नाउ दैट इज नॉट अ 1 year or 2 year स्टोरी. ओके. जब तक चाइना अगेन मेक्स सम फैक्ट्रीज और डज समथिंग एल्स, नेक्स्ट 5 to 8 years तो पक्का इंडिया में केमिकल सेक्टर्स हैड टू डू वेरी वेल. सिंपल. अभी ये किसी ने समझ लिया होता, ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू टेल इन हाइंडसाइट के यार easy था. It is difficult to pick those sectors, but if you are able to pick the right sector, you don't have to waste time in picking the right company. कोई भी कंपनी पकड़ो, सबने 100 times किया. So it is useless to sit and find which is the best company in the sector. The whole sector will do well. So even if you go wrong, 100 के जगह 99 rupees कमाओगे, 98. पर all of these have given 100x. So doesn't matter then. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ guys? यस सर। If you pick the right sector, कि if you feel next 5 साल 8 साल क्या चलेगा, then you are doing crazy things. क्या करना चाहिए सर? हाउ डू यू फाइंड आउट द सेक्टर्स? पहले ना बेसिक होना चाहिए. प्रिलिमिनरी स्टडी शुड बी हाउ डू यू क्रैक डाउन अ सेक्टर. कोई भी एक सेक्टर पकड़ो, उसका पूरा वैल्यू चेन समझो, स्टार्टिंग से एंड में होता क्या. इफ यू आर एबल टू डू दैट, that's it. So my suggestion is, in this fourth one, this is a bit tricky, but this is a very powerful way to screen stocks. Very powerful way to screen stocks. क्या कर सकते हो? एवरी वीक ना एक टारगेट, हर वीक एक कंपनी का वैल्यू चेन समझूंगा. मे बी वंस इन 15 days, 2 वीक में एक कोई भी सेक्टर लूंगा मैं. सेक्टर का पूरा वैल्यू चेन आई अंडरस्टैंड. इफ यू आर एबल टू डू दैट, एक बार आपको सेक्टर समझ गया, ये सेक्टर में क्या चीजें होती है, क्या होता है, सो देन आपको पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है. Correct. So my suggestion is read a few sectors, and I guess it will do the needful. From where we can study industry, how in the whole industry work. Like हाँ, see, correct. So a very nice question. Sir, industry analysis आपने बोला कैसे कर सकते? See, what we can do is, how do we do industry analysis? Is you can read, if let's in the same sector. Now I was last 2 weeks back studying for banking and NBFC sector. वही टाइम पे ना एक एनबीएफसी का आईपीओ आया. व्हेनेवर अ कंपनी कम्स अप विद एन आईपीओ ना, दे हैव टू सबमिट समथिंग कॉल्ड एज DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ये ना 700 to 800 पेजेस लॉन्ग होता है. इसमें द कंपनी नॉट जस्ट स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ बट आल्सो स्पीक्स अबाउट द होल इंडस्ट्री. सो इफ यू आस्क मी, द बेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड अ सेक्टर और एन इंडस्ट्री इज, अगर वो कंपनी में कोई, अगर वो सेक्टर में देयर इज अ न्यू कंपनी कमिंग अप विद एन आईपीओ, यस, तो उसका डीआरएचपी पढ़ लो. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सेक्टर. I am very bullish for the next. जैसे chemical sector has done well in the past. If you ask me, one promising sector, and I feel I might be completely wrong. I might be completely wrong. But I feel the power sector will do extremely well because India का power consumption is very less, and we want to do any kind of development. Power is a basic necessity now. Electricity is super basic. Data center बनाना है, AI में आगे काम करना है, you need power. Yes, you need power everywhere.
तो क्या कर सकते हो अब इन दिस केस? तो पहला चीज ना गाइस, पूरा इंडस्ट्री समझो, पूरा इंडस्ट्री समझो कैसे वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट ऑल अंडरस्टैंडिंग आई हैव अबाउट पावर सेक्टर। पहला चीज आता है फ्यूल सोर्सिंग। पहला फ्यूल सोर्सिंग करो। फ्यूल सोर्सिंग मतलब नाउ पावर कैसा बनता है, हाउ डू यू जनरेट मेक इलेक्ट्रिसिटी? टू मेक इलेक्ट्रिसिटी यू नीड सम रॉ मटेरियल टू डू दैट। तो यू नीड कोल, you need gas, you need maybe uranium. You can make electricity through different ways, right? Through coal, through gas, through uranium, through renewable sources, right? That is one, wind, water, sunlight. इससे भी आप बना सकते हो। तो you first need all these things. You need coal, gas, uranium, renewable resources वगैरह। तो यूरेनियम का तो कोई कंपनी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कैन ओनली गिव दिस। कोल के लिए यू कैन, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कोल इंडिया, करेक्ट। गैस के लिए यू हैव ओएनजीसी। रिन्यूएबल तो ये तो फ्री में मिलता है ना, नेचर देता है अपन को। तो ये फ्यूल सोर्सिंग हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है कंपनी में, इन दिस होल सॉरी सेक्टर? फर्स्ट यू विल सोर्स द, इफ लेट्स से मेरे को कोल यूज करके बनाना, सो आई कोल इंडिया से मैं कोल खरीदूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? हाँ, if I have the coal, I need the machine ना, जिसमें I put the coal and then I make electricity। तो इक्विपमेंट चाहिए मेरे को। इक्विपमेंट बनाता कौन है? Equipment manufacturer. Yes, they provide the machine, the equipments that is required, okay, to make power. Power बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए you need equipments। तो आपको कौन से कंपनीज है यहाँ पे? You have भारत फोर्ज, you have ABB, you have Siemens, L&T, भारत इलेक्ट्रिक, वेल, एक्सेट्रा। तो लॉट ऑफ कंपनीज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। फिर क्या आता है गाइस? मेरे पास रॉ मटेरियल है, मेरे पास इक्विपमेंट है जहां पे आई पुट सिंपलिस्टिक वे में एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बट कैन आई डू दिस एट माय होम? नो, यू हैव टू डू दिस इन बिग फैक्ट्रीज। आप आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकता है, वो एवरीवन अंडरस्टैंड्स। तो यू नीड ईपीसी कंपनीज। ईपीसी क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सो these companies ना, they build and they commission power plants। पावर प्लांट क्या होता है? जहाँ पे पावर बनता है। तो मैंने रॉ मटेरियल ले लिया, मैंने इक्विपमेंट खरीद लिया, ईपीसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। पर अभी मैं ये कहाँ पे रखूंगा? तो दिस ईपीसी कंपनीज ना, आपने एक पीस ऑफ लैंड लिया, अभी हाउ शुड यू कंस्ट्रक्ट अ पावर प्लांट ऑन इट? कैसे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पावर जनरेट होगा तो यू नीड सम आउट, यू नीड सम कूलिंग। तो वो प्रॉपरली प्लानिंग कौन करके देता है? ईपीसी कंपनी। दे बिल्ड पावर प्लांट्स, दे बिल्ड एंड कमीशन द पावर प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे एलएनटी आता है, स्टर्लिंग एंड विल्सन आता है। सो ये हो गया तीन बेसिक स्टेप्स। अभी ये सब रेडी है, नाउ लेट्स मेक पावर। कैसे बनाओगे? यू हैव पावर प्लांट ओवर योर, पावर प्लांट, पावर प्लांट में बनता है पावर। फिर इसको आप ट्रांसपोर्ट करोगे सब स्टेशन पे। यू विल सेंड इट टू सब स्टेशन। सब स्टेशन से यू विल सेंड इट टू ऑफिसेस, होम्स, जो भी है हमारे घर पे जहाँ पावर का जरूरत है। वाई कांट यू सेंड इट डायरेक्टली? द रीजन इज, पावर प्लांट में यू मेक अ लॉट ऑफ पावर, एंड ऑफिस होम में अपना रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इज वेरी लेस। द पावर दैट वी, इलेक्ट्रिसिटी दैट वी नीड इज वेरी लेस, करेक्ट। तो यहाँ से इतना ज्यादा पावर आएगा, अपना उतना कंजम्पशन ही नहीं है। सो व्हाट दे डू इज, यहाँ से यहाँ पावर जाता है, दिस पावर इज इन हाई वोल्टेज। ये जो जाता है ना, दिस गोज इन हाई वोल्टेज। क्यों ऐसा? बिकॉज पावर लॉस नहीं होना चाहिए। एंड देन सब स्टेशन में दे हैव सम मशीन्स जिससे दे विल स्टेप डाउन द पावर, एंड यहाँ पे जाएगा लो वोल्टेज में, बिकॉज अपना रिक्वायरमेंट घर ऑफिस में कम होता है, वी हैव लेस रिक्वायरमेंट, सो लो वोल्टेज में जाएगा। करेक्ट ना? पावर प्लांट देखा है जहाँ पे पावर जनरेशन होता है। तो फोर्थ टाइप ऑफ कंपनी इज पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, यहाँ पे यू हैव एनटीपीसी, यू हैव टाटा पावर, यू हैव अडानी पावर, करेक्ट, एक्सेट्रा। आई माइट बी फॉरगेटिंग सम कंपनीज, मेरे को जो माइंड में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। हाई वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे यू स्टेप अप। सो पावर प्लांट से लेके यू वांट टू सेंड द पावर टू सब स्टेशन, दिस इज कॉल्ड पावर ट्रांस, दिस इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन, दिस इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन। यहाँ पे बिगेस्ट कंपनी पावर ग्रिड। इट ओन्स एंड ऑपरेट्स 45% ऑफ इंडियाज ट्रांसमिशन नेटवर्क। 45% ऑफ इंडिया ट्रांसमिशन नेटवर्क, ओके, यहाँ पे पावर ग्रिड कंपनी के पास। ठीक है। फिर सब स्टेशन में क्या होता है? हाई वोल्टेज पावर आपको चेंज करके लो वोल्टेज में बेचना, भेजना है, करेक्ट। सो हाउ कैन यू डू दैट? थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स। तो यहाँ पे यू हैव समथिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स विच विल चेंज द वोल्टेज। दीज आर इक्विपमेंट्स दैट विल चेंज द वोल्टेज। ये कौन करके देता है? कंपनी लाइक तरेल, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, सीजी पावर, एक्सेट्रा, दीज कंपनीज, करेक्ट। फिर लो वोल्टेज, इसको क्या बोलता है नेक्स्ट?
is power distribution. Seventh type of company is power distribution. लो वोल्टेज में आप घर 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 जाके पावर देते हो, इसमें कोई कंपनी नहीं होता, जनरली स्टेट ओन कंपनीज, डिस्कॉम्स बोलते हैं, स्टेट ओन कंपनीज होता है, नो लिस्टेड प्लेयर आई गेस। करेक्ट, तो ये हो गया। फिर देयर आर अदर कंपनीज एट द एंड जो रिटेल सर्विसेज देते हैं अभी। यस, देन यू हैव रिटेल सर्विसेज, मतलब ईवी चार्जिंग करके स्मार्ट मीटर्स बनाते हैं। एंड देन यू ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, घर पे आके वो मीटर रीडिंग वगैरह करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं वगैरह, सारी चीजें ऑपरेट करेंगे, मैनेजिंग करके देता है। सो ये पूरा आपका जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है पावर सेक्टर आपका कवर हो गया। यू स्टार्ट, पहले रॉ मटेरियल लो, फिर मशीन लो, फिर एक बंदा आपको प्लान करके देगा पूरा, देन इन पावर प्लांट यू विल जनरेट पावर, देन इट इज ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिशन होगा टू सब स्टेशन, फिर वहां से आप ट्रांसमिशन करके आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। बीच में सब स्टेशन यू हैव टू चेंज द वोल्टेज, वो ट्रांसफार्मर आपको हेल्प करेगा, उसमें कंपनी का करेल एंड सीजी पावर। एंड देयर आर रिटेल सर्विसेज एंड ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंपनीज आल्सो हु मैनेज मेंटेन एवरीथिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है। ठीक है, सो ये आपको हो गया। इन केस यू वांट टू रिमेंबर दिस, मैंने एक यहाँ पे प्रॉपर टेबल रख दिया जहाँ पे सारे स्टेप्स है, फ्यूल सोर्सिंग, इक्विपमेंट, मैंने ईपीसी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली इन डिटेल, एंड विच ऑल लिस्टेड कंपनीज आर देयर इन ईच ऑफ द सेगमेंट। सो मे बी दिस माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड द सेक्टर वेल। करेक्ट, क्लियर हो यहाँ तक गाइस? यस सर। अभी ना Yes, sir. आगे का जो है स्टेज 2 कैसे एनालाइज करेंगे। यस, तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर staying till the end everyone. I hope you guys learned something in today's session.